Hello, everyone, and welcome to Career Launcher. So, good afternoon to all of you. I hope you are aware that every day at 3 p.m. we come up with the Hindu analysis. Today is Saturday, that is 25th January, and we are here with the Hindu analysis of 25th January. So, let us begin. So, if I am audible, visible, everything is fine, please write yes in the comments so that we can start our session. So, today is 25th January, that is Saturday, and tomorrow is Republic Day actually. So, we are going to start today's class with the important articles on the first page. Okay, thank you, Agastya. You're audible. Okay, so let us begin with the first article, the top article on the first page, and it says 8 killed in Maharashtra in Ordinance factory blast. So this article we will be discussing in detail. Then we will be discussing about the US starts deportation operation. So that also we will be discussing it in today's class. So let us begin. देखो first class जो ये लिखा है 8 killed in Maharashtra in Ordinance factory blast. Okay, so please be careful. The spelling of Ordinance is Ordnance. आप देख रहे हो? This is Ordinance and there is something called as Ordinance. Ordinance. इस दोनों में सिर्फ I का डिफरेंस होता है. Here is I and here is no I. ये ऑर्डिनेंस पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज होता है अंडर आर्टिकल 123 फॉर द सेंटर एंड 213 फॉर स्टेट्स, which talks about passing ordinance when there is a recess in the parliament or a state legislature, which is almost equivalent to the law. ये ऑर्डिनेंस जो है जिसमें I नहीं होता है, this is actually a gun factory. ऑर्डिनेंस मतलब होता है जहां वेपन्स वगैरह बनते हो, the plant or manufacturing plant, you can say manufacturing plant of guns, artillery, etc. That is what you should know. Okay. So that is what तो हुआ ये कि यहाँ Bhandara is a place in Madhya Pradesh. So let me show in the map. So this is the state of Maharashtra. This is the state of Maharashtra. And this is actually the place called as Bhandara, where actually this unfortunate incident happened, where actually the ordnance factory or the factory where the guns and artilleries are manufactured, we had witnessed a blast, and because of which 5 people died. SIT मतलब होता है Special Investigation Team. A Special Investigation Team. So a Special Investigation Team of police has been set up, है ना? To find out the reason for the blast. Factory also forms inquiry team. Factory ने भी अपनी inquiry team बनाई है. And NDRF rescuer. So I hope you are aware, we had discussed about NDRF earlier also. National Disaster Response Force, which is formed under Disaster Management Act of 2005. 2000 DM Act came, I think, in 2000. Please check it. As far as I remember, it's 2005, but प्लीज चेक इट. सो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स बनाई जाती है, जो ऑरेंज कलर का जिनका ड्रेस होता है आपने देखा होगा, आई एम श्योर. सो बेसिकली दैट इज आल्सो देयर टू एक्चुअली इंश्योर दैट दोस who have actually are injured, they should actually be brought to the hospital as early as possible, etc. So these are the things. The blast took place at 10:40 am in the building containing low temperature pure plastic explosive, according to the statement by the ordnance factory. So that is what it says. 13 वर्कर्स जो है उनके अंदर दब गए. सो द बिल्डिंग कॉट फायर एंड कोलैप्स, ट्रैपिंग 13 वर्कर्स अंडर द डेब्री. डेब्री मींस वही जो उसका रेसिड्यू मटेरियल बचता है ब्लास्ट के बाद. दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. तो दीज आर द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट. सो ये उनके नाम है जो जिन लोगों के. सो दीज आर द थिंग्स. ओके, सो यू शुड नो. नाउ फर्स्ट पेज में एक और आर्टिकल थी. 538 अरेस्टेड एज यूएस बिगिंस डिपोर्टेशन ऑपरेशन. Okay, so I hope you are aware. We had done a class on the recent upcoming of Donald Trump's oath taking. So first of all, go to our channel, subscribe to the channel, Law and Test channel को. Live वाले सेक्शन में जाना, देखो यहाँ पर जाना, नीचे में आपको मिल जाएगी. डोनाल्ड ट्रम्प पर मैंने क्लास लिया है, the oath taking ceremony of Donald Trump, where we had discussed that actually उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डोनाल्ड ट्रम्प will actually stop the principle of just solely principle. ये सब मैंने आपको बताया भी था. And he is actually ending many birthright citizenship. पहले क्या होता था ना, so I discussed about just solely principle. मतलब ये होता है कि if even if both the parents are from some other country,
But if a child is born in the USA, on the land of USA, that child will get citizenship. Okay, so this is what you should be knowing about just solely principle. Drone Euro program. Piyush, you can read it. बहुत detail में नहीं जाना, but yes, you can read because if India joins any grouping, that it becomes slightly important. Okay. Fine. So that is what we are talking about. Just solely means right of soil कि आप जिस जमीन में पैदा हो उसमें आपको citizenship मिल जानी चाहिए. That is what the idea. So now the Donald Trump has said that he will end this type of principle, and in fact he has said that whosoever has come illegally, we will deport them back. Deport का मतलब वापस भेजना. So बहुत सारे illegal immigrants जो दूसरे countries से आए हैं, hundreds of migrants in US were arrested on Thursday and others flown out of the country on military aircraft as White House said Donald Trump promised deportation operation etc. and all. So that is what you should be knowing about. Okay, so deportation मतलब होता है वापस भेज रहा है नहीं, sent back to the parent country from where they came through flights and all. Okay, yes. First which make our article the India and Indonesia set to discuss Myanmar conflict during talks. Actually, Indonesia's President Prabowo Subianto was actually in India, and you can see this is the image. He is meeting the Foreign Affairs Minister of India, Mr. S. Jaishankar. Okay. So the raging conflict in Myanmar will feature prominently in discussion between visiting President Indonesia's President Prabowo Subianto and PM Modi. Okay. So he will be the chief guest of the Republic Day celebration. ये important है. This is the most important thing that you should be knowing. और ये पूछा जाएगा. ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि who was the chief guest of the Republic Day this year. This is asked in many exams. ठीक है, तो याद रखिएगा. So Indonesia's President Prabowo Subianto is actually the main chief guest in the India's Republic Day this year. Now, so India recently hosted a number of ethnic armed organizations from Myanmar as well as members of exiled national unity government. India hosted. देखो अब इसमें क्या है, पहले आपको समझना है. इसमें जो मेन बात हो रही है वो म्यांमार इशू से रिलेटेड है. So India and Indonesia. Indonesia ये वाला हिस्सा है. This is actually Indonesia. है ना? बल्कि ये पूरा हिस्सा. This is Indonesia है ना? They are discussing issues of what? Of Myanmar. But why is Myanmar so important for India? उसका रीजन है, if you see, this is the northeastern region of India and this is Myanmar. Okay, so what happened was कि in Myanmar on 1st February 2021 military coup happened. ये आपको पता होगा, I'm sure. If not, then let me explain. Military coup, COUP. Coup means the democratically elected government was overthrown by the army. So which was the democratically elected government? NLD party थी, National League for Democracy. So that was ruling. That was ruling Myanmar. But on 1st February 2021, that was removed and military came to power. So National League for Democracy की जो main leader है वो ऑन सान सूकी, आपने इनका नाम सुना होगा. I'm sure you must have heard her name. ठीक है, National League for Democracy's main leader is Aung San Suu Kyi. So they were ruling, but on 1st February 2021, the democratic government was overthrown and military came to power. In fact, Aung San Suu Kyi had got Nobel Prize also in the year, Nobel Peace Prize in 1991. याद रखिएगा because these are asked in the exams. ठीक है? Okay, so that is what is being talked about. तो उसके बाद क्या हुआ है कि जब से military coup हुआ है ना, उसके बाद things are not very fine. We are seeing Myanmar in fact is in civil war. Civil war means there is no one group which is controlling the entire country, but there are multiple groups fighting each other. तो अगर आप देखोगे, अगर आप सर्च करोगे Myanmar civil war, so you will get to know कि देखो एक साइड में ये है मिलिट्री की साइड है ना, तत्मादाव इज मिलिट्री, द म्यांमार्स मिलिट्री. ठीक है, मिलिट्री ये भी लिखते हैं और जनता भी कहीं के पे लिखते हैं, JUNT है. और जो दूसरी पार्टी है, दिस इज कॉल्ड एज नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट व्हिच इज अगेंस्ट आर्मी. ओके, एंड दे हैव दीस पीपल. ठीक है, अराकान आर्मी उसमें है, देन पीपल्स डिफेंस फोर्सेस है, बहुत सारा है, देन चिनलैंड काउंसिल है. So these are actually, so there are two groups which are ruling primarily. One is state administration led by military. Another is national unity government led by Arakan army and other people. Okay? तो अगर आप देखोगे तो कोई एक का रूल नहीं है. देखो जैसे लिखा है कि अक्टूबर 2023 तक Tatmadaw or the military of the Myanmar was ruling 40% of the country.
ठीक है. सो फिर देखो जो सेकंड हाफ में चिनलैंड डिफेंस फोर्सेस हैड कैप्चर्ड चिन स्टेट. तो चिन स्टेट ये वाला है, तो ये वाला चिन स्टेट है यहाँ पर, यहाँ सर यहाँ पर जो मणिपुर के आसपास. तो देखो दिस इज चिन स्टेट है ना, एंड दिस इज एक्चुअली समवेयर राखीन स्टेट. And here in Rakhine state, you will find people, mostly people from Rohingya. Rohingyas were from this state. That is what you should be knowing. Now, what happened was, तो actually क्या इशू कि एक और इशू हो रहा था कि म्यांमार में कि whenever there was instability, so people were coming to India, and it was causing migrant crisis and all. So that is what also is an issue. So India has issues. So India wants that there should be stability in Myanmar, of course, because otherwise we will get affected. तो अगर म्यांमार में कुछ इंस्टेबिलिटी है तो इंडिया में इश्यूज होने लगता है, बिकॉज इधर क्रॉस करके लोग आने लगते हैं बॉर्डर. सो दैट इज व्हाई इंडिया आल्सो वांट्स दैट वी शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड ऑल. सो इसीलिए अगर आप देखोगे इस आर्टिकल में तो कई जगह पर म्यांमार के डिस्कशन से रिलेटेड बातें हुई. इज इट क्लियर? डू हैव एनी इशू? एंड नाउ प्लीज टेल मी, म्यांमार की कैपिटल क्या है? इट्स ओल्ड नेम इज बर्मा. व्हाट इज इट्स कैपिटल and what is its currency? Can anyone tell me in the comment? I'll be happy to know. देखो अर्लियर जो कैपिटल होता था यांगोन था, यहाँ पे देख रहे हो. अब न्यू कैपिटल इज नायपीटाओ. दिस इज द न्यू कैपिटल. यस अगस्त्या, हियर यू आर राइट. एंड द करेंसी इज एक्चुअली कयात इज द करेंसी, है ना. सो ये सब पता होना चाहिए. ओके, सो दैट इज व्हाट इज बीइंग. यस अगस्त्या, हियर वेरी गुड, राइट. ठीक है. नाउ on the first page there was an article, Uttar Pradesh temple gets FCRA not without request. So हम लोग को ये जानना है कि what is actually FCRA, Foreign Contribution Regulation Act. So I hope you are aware. FCRA होता ये है कि if you are running let's say any trust or NGO, मान लीजिए आपका कोई NGO है या ट्रस्ट है, so of course it is runs on donations. लोग डोनेट करते हैं. But if you want donation from foreign country, so some citizen, let's say a citizen is living in UK citizen is there, and he wants to donate to your trust, so he cannot donate without permission from the government. So this NGO should need FCRA license which is given by the Home Ministry, Foreign Contribution Regulation Act. So this FCRA license is generally I think given for 5 years by Home Ministry. अगर आपका कोई ट्रस्ट है, कोई NGO है, कोई ये, और आप डोनेशन मंगवा रहे हो, उसमें बहुत सारे रेगुलेशन होते हैं, तो आप अगर बाहर कंट्री से मंगवा रहे हो तो आपको FCRA लाइसेंस चाहिए. And there are a lot of regulations that you should have a bank account in SBI in Delhi. ठीक है. और भी बहुत सारे रेगुलेशन होते हैं कि you should have funds only for a particular things and all. तो so there are a lot of regulations. I'm not going in that detail, but you should have a basic idea कि FCRA होता क्या है. ठीक है. So that is what you should be knowing. Now let's talk about editorials. At 75, constitutional justice and personal liberty. So 75 because we are actually the 75th. We are going to celebrate Republic Day, है ना, tomorrow. अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना है कि what is the date mentioned in preamble and why 26 January 1950 was chosen as the first Republic Day? कोई बता सकता है ये दोनों क्वेश्चन का आंसर? I'll be very happy if you tell me. Anyone? The date mentioned in preamble is what? So the date mentioned in preamble is 26 November 1949. Yes, Agastya, very good. Anisha, आपने भी सही जवाब दिया. हाँ. So 26 November 1949 is the date mentioned in the preamble, where actually almost all the things of the constitution were completed, and fully it came into force on 26 January 1950, because we had to match this day with 26 January 1930, and 26 January 1930 was Purn Swaraj resolution, was Purn Swaraj Divas was celebrated by Congress. ठीक है. After Lahore session of Congress, right? हाँ. ठीक है. So that is why 26 जनवरी को याद में 26 जनवरी 1950 को चूज किया गया था. Okay. So here actually the author is talking about the 75 years of constitution and all. ठीक है. The Supreme Court. So she's actually talking about personal liberty.
So this article is all about personal liberty, dissent. Acha, you understand the concept of dissent? This dissent मतलब होता है a healthy criticism of the government. So that is what she's talking about. The Supreme Court reinstated Justice S. Fazal dissenting opinion A.K. Gopalan case and all. तो एक केस की बात करें, then Puttaswamy case, A.K. Gopalan केस हुआ था. इसमें हुआ ये था कि A.K. Gopalan was arrested under preventive detention. A.K. Gopalan was the leader of one of the opposition leader कह सकते एक तरह से when Jawaharlal Nehru was the prime minister. So, but he was arrested and he challenged his arrest in the court. However, the Supreme Court denied it. Supreme Court did not give him the relief. तो इसको काफी बाद में क्रिटिसाइज भी किया गया था. This judgment of Supreme Court was later on criticized itself by the Supreme Court. Rule that did not require Indian courts to apply a due process of law. तो खैर, I'm not going in procedure established by law and due process of law, but short में आप समझ लो. A.K. Gopalan was an opposition leader from Communist Party when Jawaharlal Nehru was the prime minister, and he was arrested and all under Preventive Detention Act. So he challenged this law. तो जब वो चैलेंज करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत नहीं दिया था एक तरह से और रिलीफ नहीं दिया. सो व्हाट हैपेंड वाज, बट लेटर ऑन in case Puttaswamy case, the Supreme Court itself criticized the previous order. तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही प्रीवियस जजमेंट्स को बाद की जजेस ने क्रिटिसाइज किया था A.K. गोपालन केस को. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट. ऐसे पुट्टास्वामी केस कौन से जजमेंट से रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड विद व्हाट? So in this judgment, the Supreme Court passed a very important order. What is that? K.S. Puttaswamy case, very famous, asked in many exam, and it expanded the definition of Article 21. Yes, Agastya, very good. Right to privacy is the fundamental right. Yes, Agastya, Piyush, you are right, huh? So that is what she is talking about, है ना? तो इसी की बात कर रहे हैं. Then preventive detention, arbitrary arrest, denial of fair trial. So preventive detention, अच्छा, she is talking about preventive detention. So which article of the Constitution talks about this? Preventive detention का मतलब होता है कोई बंदा है, he has not committed a crime yet, but the police or the government fears that he might commit a crime and he is arrested. मतलब क्राइम करने से पहले ऐसा शक हो जाए कि ये क्राइम करेगा तो इससे अरेस्ट के लिए. बट इसको क्रिटिसाइज किया था. दिस प्रोविजन इज क्रिटिसाइज्ड अ लॉट कि इसका मिसयूज, द चांसेस ऑफ मिसयूज इज वेरी हाई एंड ऑल. यस अगस्त्य, वेरी गुड. आर्टिकल 22 टॉक्स अबाउट इट. सो आर्टिकल 22 आप पढ़ोगे. आर्टिकल 22 क्लास 4 टॉक्स अबाउट नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर डिटेंशन शैल ऑथराइज डिटेंशन ऑफ पर्सन फॉर लॉन्गर देन 3 months अनलेस, मतलब 3 महीने से ज्यादा का सजा पनिशमेंट नहीं हो सकता जेल, अनलेस एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाए, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं एटसेट्रा. वी आर नॉट गोइंग इन दैट डिटेल, बट यू शुड हैव अ रफ आइडिया अबाउट इट. सो आर्टिकल 22 क्लॉज 4 टॉक्स अबाउट इट. ठीक है, 22B नहीं, 22 क्लॉज 4. ठीक है, ओके ओके. तो यही सब बात हो रही. शी इज टॉकिंग अबाउट इट. प्रिवेंटिव आर्बिट्रेरी अरेस्ट का मतलब होता है इट वायलेट्स आर्टिकल 14, है ना. जनरली आर्बिट्रेरी अरेस्ट मतलब है कि इस सेंस में समझ लो कि not following the rules. When a police is arresting someone without following the judgments of the Supreme Court or the due process of law, denial of fair trial, these are the things she's talking about. ठीक है. अच्छा, एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, एक गाइडलाइन है. प्लीज टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द गाइडलाइंस. दिस गाइडलाइन एक्चुअली टॉक्स अबाउट कि what are the procedures or what are the things that a police officer is supposed to follow while arresting a person. So this is a guideline set by given by the Supreme Court. क्या नाम है उस गाइडलाइन का? I am waiting for, because these are important. आज पूछा जाता है. Anyone? उसको कहते हैं DK बासु गाइडलाइंस. So if you get a chance to visit police station, वहां भी लगा रहता है कई जगह DK बासु गाइडलाइंस by the Supreme Court of India. इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं कि पुलिस ऑफिसर शुड बी वेयरिंग द ड्रेस, शुड हैव द नेम प्लेट, बहुत सारे आईडी होना चाहिए, ये होना चाहिए, रात में नहीं अरेस्ट कर सकते हैं इफ लेडीज, if there is a female. So there are a lot of rules that are made by the Supreme Court. Yes, Agastya, very good. DK Basu guidelines. Great.
ओके, अभी साइड में आर्टिकल थी competitive populism. तो this is actually a political article, so I'll not be going in the politics, but we will be discussing the academics from academic point of view. इसमें I hope you are aware Delhi election is happening. Okay. उसमें जो वर्ड लिखा है competitive populism. Populism मतलब क्या होता है? फेमस होने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, that's called as populism. So all the parties actually are trying their best to ensure ki, to convince the population, the Delhi's population that I will give more amount of money or something like that. तो उसमें एक टर्म है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया था, वो फ्रीबी कल्चर, और हिंदी we call it as रेबड़ी. So some political parties saying I'll be giving this amount of money to women. Some parties saying I'll be giving this much amount of things to women. I'll be giving this thing to free etc. तब उसमें डिबेट होता है. So that's the debate. So we will be discussing it from academic point of view only. We will not be taking sides. तो freebies का जो debate है कि क्या freebies देना सही है, गलत है, ethically and all. So I'll tell you both the aspects. ठीक है. First thing कि freebies, अगर कोई गवर्नमेंट, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल if someone is X, this person is saying that I will give 100 rupees to everyone or something like that, कि अगर हमको तुम जिता दोगे तो हम तुम्हें इतना पैसा देंगे, or something like that. I will give 2000 rupees or 3000 rupees. There are different things, or I will make education free or school free or bus free or metro free, etc. So that may come under the definition of bribery. And bribery is considered as a corrupt practices in representation of people's act. Those who are opposing it, those who are criticizing freebie culture, या जो भी आप कह लो, कि एक तरह का आप तो ब्राइब दे रहे हो ना, कि अच्छा तुम हमको वोट दो तो हमको पैसा देंगे, or something like that. So that can be considered as, or even if it is a promise कि हम बाद में तुमको देंगे, any gift or promise by a candidate, etc. So this can be considered as a corrupt practices, and in that case a person can be even disqualified for having the fighting the election and all. ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट होता है खास के इलेक्शन से रिलेटेड. सो इसको ये आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि the politicians cannot announce कि I'll be giving this for free, that for free, etc. Now there is another argument which people say, which actually support is actually, जैसे for example, जैसे there are various previous judgments of Supreme Court where Supreme Court has said that right to health is a fundamental right under Article 21. Similarly, right to education is a fundamental right. ये कौन से आर्टिकल में बताइए? Which article talks about right to education is a fundamental right? The right to clean environment is also a fundamental right. अगर मान लो कि कोई गवर्नमेंट, if any government is giving health for free, completely free, or education for completely free, then it is the duty of the government. This is an argument given by many people. Yes, right to education is 21 capital A. Yes, Agastya Iyer, you're right. ठीक है. Actually, Supreme Court ने पहले कहा था when this article was not added. Before that, the Supreme Court had said that Article 21, which says right to life, it also includes right to education. ठीक है. फिर बाद में Parliament made 86th Constitutional Amendment 2002 and added Article 21 capital A separately to say that right to education is a fundamental right for 6 to 14 years of child. यानी elementary basic education जो है वो fundamental right है. तो अगर एजुकेशन और हेल्थ फंडामेंटल राइट है तब तो गवर्नमेंट को फ्री में देना चाहिए. दैट इज द आर्गुमेंट व्हिच इज गिवन. कि कंप्लीटली फ्री, if a person is poor and he or she is not able to get hospitalization, he is not able to pay the fees of the schools or a hospital, then it should be provided by the government because it is the responsibility of the government. है ना, कि फंडामेंटल राइट ये मतलब होता है ना कि गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड इट, है ना, right to education, clean basic education, at least not even higher education, तो कम से कम basic. So these are actually the two arguments given by the two actual different arguments, one supporting the idea of freebies and other opposing the idea of freebies. अब इसमें बहुत सारी चीज होती है कि नहीं, इसको दो डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. मतलब something should be called as necessity and something should be called as freebies. मतलब कुछ लोग ये दलील देते हैं because these are actually, I am saying you from the editorials, so that gets published in newspaper. तो उसी से मैं आपको समरी निकाल के बता रहा हूँ. जैसे मान लीजिए कोई बोलेगा बेसिक एजुकेशन है 6 to 14 ईयर्स के लिए, तो ये नेसेसिटी हो गया. बेसिक हेल्थ केयर है तो ये नेसेसिटी हो गया. कभी कभी क्या होता है कि समटाइम्स सम पॉलिटिशियंस या पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ज्यादा मतलब दे प्रॉमिस मोर. जैसे कोई अगर कह दे कि हम स्कूटी बांट देंगे, कार बांट देंगे और समथिंग लाइक दैट, और लेट्स से they are going too much ahead कि मैं I will give you this much amount of money or that much amount. मतलब
बेसिक नेसेसिटी से अगर ज्यादा हो जाए तब उसको फ्रीबी किया जाए, कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट कहते हैं। सो देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस, different arguments of different people, what should be considered as freebie and what should be considered as necessity. ठीक है, तो ये आपका अपना अपना ओपिनियन है, you can have your own opinion. I have discussed both the aspects. ठीक है, okay. Since we are talking about Delhi election, now the first thing that comes to our mind is which article of the constitution deals with the governance in Delhi. I hope you are aware we have chief minister as well as lieutenant governor होते हैं. Instead of governor, like we have governors in states, we don't have governors in Delhi, we have lieutenant governor. And comparatively, lieutenant governor is more powerful as compared to governor. Because the land, police and public order है ना क्या, ये तीनों जो है land, police or public order is in the hand of the lieutenant governors. Yes, the right answer is article 239 capital AA. अच्छा, मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह से कैपिटल A कैपिटल B रखा है, this was added later on by some constitutional amendment. So कौन से constitutional amendment से इसको ऐड किया गया? By which constitutional amendment this was added? The governance of Delhi happens under article 239 capital A, and this was not originally present but added later on in the constitution. By which constitutional amendment? In 1990s. The right answer is 69th amendment. ठीक है, B is the right answer. है ना, ये कई बार न्यूज में रहता है, what is 239 AA and how the Supreme Court interpreted and all. Yes, Agastya, very good. आप देखोगे, so 239 AA inserted by 69th amendment 1991. इसे पूरा डिटेल लिखा है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी होता है, कैसे गवर्नेंस होगा, कौन सी चीज किसके पास जाएगी, है ना. So there are different things, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास क्या पावर होगा, एटसेट्रा. ओके, यस. नीचे में एक आर्टिकल, फाउंडेशनल वैल्यूज द जर्नी ऑफ द इंडियन स्टेट. So basically, again, he's actually spokesperson of DMK. So DMK is actually a political party who is ruling the state of Tamil Nadu. Mr. M.K. Stalin is from the same political party, who is the chief minister of Tamil Nadu. So he's writing about 75th anniversary of the republic and all. So he's talking about Bhimrao Ambedkar delivering the closing address of Constituent Assembly. So these are the things being talked about. अच्छा, हाँ, हम लोग बात कर रहे थे ना कि कौन सा डेट है. We have just discussed it. That which date is mentioned in the preamble. So 26 November 1949. And here it is. नीचे लिखा हो देखो, third last line में 26 November 1949. Okay, so then he's actually talking about federal structure, ठीक है, regional languages, fiscal federalism. मतलब फेडरल स्ट्रक्चर मतलब है कि ये हमेशा टसल चलते रहा है कि whether federal government should have more power, means whether federalism should be more powerful or there should be a unitary form of government. मतलब सेंटर के पास ज्यादा पावर हो कि स्टेट के पास, मतलब सेंटर्स पावर शुड बी इक्विवेलेंट टू स्टेट और सेंटर शुड हैव मच मोर पावर देन स्टेट. तो ये टसल चलता रहा है, ठीक है. कई बार होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जीएसटी की बात करें. सो व्हेन जीएसटी वाज इंप्लीमेंटेड, मेनी पीपल से कि द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नाउ मोर पावर देन स्टेट्स. ये सब बताते रहते हैं. सो दीस आर द थिंग्स being talked about. ये जैसे बता रहे कि नेग्लेक्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस हुआ है. सो दीस आर सम ऑफ हिज ओपिनियन, है ना. हाँ, तो ये बता रहे कि फेडरल वर्ड, टेक्निकली वर्ड नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट स्टिल फेडरल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसिडर्ड एज फेडरल. एंड इन फैक्ट इन द सुप्रीम कोर्ट एसआर बोमई केस, the Supreme Court said that federalism is the basic structure of constitution. ये important है, is the basic structure of constitution. ठीक है, that is what you should be knowing. Okay, so ये बात करें, है ना. Another question of contemporary interest is of how India has matured over 75 years into a social democracy. When we talk about social democracy, the most important thing that comes to our mind is DPSP, Directive Principle of State Policy. It talks about social economic democracy. Social plus economic democracy. तो social democracy का क्या मतलब हुआ? Means we should ensure social justice. What is the meaning of social justice? It means justice for the weaker section, scheduled caste, scheduled tribe, women, physically disabled, old age people, minorities. So these are actually the idea of social democracy. Workers' right, ठीक है. तो ये उसी की बात करें, सोशल डेमोक्रेसी और दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है. फिर इसमें बता डिटेल नहीं जाना है. जैसे फ्रैटर्निटी की बात करें, ही वेंट ऑन टू अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रैटर्निटी फॉर फ्लेजरिंग रिपब्लिक.
तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने फ्रैटर्निटी को खूब एम्फेसाइज किया था. So if you read the constitution, it talks about it, fraternity. So that was very much emphasized by Dr. Bhimrao Ambedkar, and fraternity means brotherhood. Brotherhood among the Indians, irrespective of religion, race, caste, gender, etc., region. There should be a brotherhood, because if there is no brotherhood, there will be disunity among the society, and it will cause more harm to the society. So that is what is being talked about. So ये बता रहे हैं कि fraternity बहुत important है. That is what the idea is. Okay. In fact, common brotherhood का concept fundamental duties में ही mentioned है. So the fundamental duty also talks about it, that the citizen of India should live with fraternity and with common brotherhood, shared brotherhood. इस तरह का statement mention है there. ठीक है. So that is what is being. इसमें अब कुछ नहीं. हाँ, अब देखो एक side में article थी. We're just talking about the Iron Age and talking about Bronze Age, Copper Age, early historic period. ठीक है. Chalcolithic period. देखो अब actually क्या है? And recently the Chief Minister, Mr. M.K. Stalin announced, जैसे एक तो ये उन्होंने अनाउंस किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन पर कि whosoever decodes the script, decodes the Indus Valley civilization script, I will give him $1 million. That is what Mr. M.K. Stalin, the Chief Minister of Tamil Nadu, had announced. तो अगर आप ये वाला वीडियो देखोगे, पहले मैंने इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिस्कशन किया, फिर मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया है चालकोलिथिक पीरियड, ब्रॉन्ज एज एंड ऑल. ठीक है. उसमें मैंने आई हैव एक्चुअली शोन द classes of shown the screenshots of NCRT books also. So I would suggest please go and watch it. This is important for many exams. बहुत सारे एग्जाम ये हेल्पफुल होता है. आपको बस सर्च करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन करियर लॉन्चर, you will get this video. Go and watch it. It is helpful in many of the exam. Even in board exam, I would suggest this would be very helpful. ठीक है. Okay. Now एक और आर्टिकल थी, जितेंद्र पाल सिंह named India's ambassador to Israel. Now I hope you are aware. Recently we have seen Israel-Hamas deal. अगर आपने नहीं देखा है क्लास, if you have not watched it, please go to our channel. First subscribe to the channel, go to the live section, और इसमें जाना, नीचे लाइव सेक्शन नीचे जाना, यहाँ पर एक वीडियो मिल जाएगा Israel-Hamas ceasefire करके. So go and watch it, where I had discussed about the recent Israel-Hamas ceasefire. And in this background, it is important that India is sending its new ambassador, Jitendra Pal Singh. ठीक है. And is going to assume the office at Tel Aviv, because India, Jerusalem is still a disputed capital, and also Tel Aviv mein India's embassy is there. ठीक है. So Jitendra Pal will be going and having and go as an envoy. Envoy मतलब वही ambassador, envoy सब एक ही चीज होते हैं. And a ceasefire pact between Israel and Hamas in Gaza gets underway and all. So ठीक है. तो Sanjeev, he is replacing Mr. Sanjeev Singla. That is what you should be knowing. ठीक है. तो ये लिखा है ना. So he has previously held important positions at External Affairs Ministry, and he assisted Mr. Jaishankar as Joint Secretary in the Ministry's office and headed important positions in Iran, Pakistan, Afghanistan desk also. ठीक है. Okay. Yes. ठीक है. इसमें इतना डिटेल नहीं जाना, just go and read it, because I think that would be more than enough. India has welcomed ceasefire and Palestinian diplomat have expressed the hope. ठीक है. इंडिया ने भी वेलकम किया है वही जो इजराइल हमास सीजफायर का, कि देयर शुड बी सीजफायर एंड नो वॉर शुड हैपन फर्दर एंड ऑल, है ना. सो इन दिस बैकग्राउंड एक्चुअली इंडिया हैज सेंट. अच्छा, I2U2 एक चीज होता है, और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर. आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस I2U2. यानी 2 I है और 2 U है. सो इंडिया, इजराइल, US, UAE. ठीक है. So that's called, these are the 4 groupings, 4 countries grouping called as I2U2. ठीक है. So this you should be knowing about. Now एक और है, China's refusal to sign treaties worrying, says Mr. Pema Khandu. So he is actually the Chief Minister of Arunachal Pradesh, and he is unhappy because China has recently decided to make to start a new dam in the Tibet region. I hope you are aware. देखो, this is India, this is China. ये Tibet region है China का. So basically here is a river which actually starts something like this, goes like this. So this is, they call in Tibet as Yarlang Tsangpo, but in Arunachal Pradesh it is called a Siang river. Siang लिखा होगा कहीं पर इसमें.
In Arunachal it is called as Siang River, and Assam it is called as Brahmaputra. all three are same river, just the name difference. और यहाँ पर आप देखोगे, this is the state of Arunachal Pradesh, AP Arunachal Pradesh. But why is Arunachal Pradesh worried? What is the reason? देखो, अगर आप देखोगे ये अरुणाचल, देखो यहीं पे जांगमू डैम है. तो the problem is, so let me write it clearly. I think somewhere here dam बन रहा है. What is the problem with the dam? Dam stops the water. उससे होगा क्या कि अरुणाचल में वाटर शॉर्टेज हो सकता है. द शॉर्टेज ऑफ फिशरीज, फिश नहीं आएगी ना. अगर डैम से रुक जाता है ना फिश भी, तो फिशरी सेक्टर जो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर डैम से पानी रोक दिया गया. ओके, देन ऑफ कोर्स इट कॉज अदर बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, अदर बेनिफिट्स. प्लस डैम में अगर मान सडनली ओपन कर दिया गेट, इफ द गेट्स आर सडनली ओपन, what will happen? It may cause like floods in Arunachal Pradesh. So dams को ना environmentalists बहुत heavily criticize करते हैं. I hope you are aware. So that is why, in fact, the chief minister is not very happy that China is refusing to sign treaties and all. So ये आपको पता होना चाहिए, because Zangmu Dam इसका नाम है, Zangmu. और भी बहुत सारे, but this is the main dam which is very much in the news. So you should be knowing about it. Yes, good afternoon, Namu. Good afternoon. Welcome to the class. Yes, देखो लिखा ना सियांग रिवर ही ब्रह्मपुत्र बन जाती है असम में. सो ऑल आर एक्चुअली सेम. बांग्लादेश में दैट इज कॉल्ड एज जमुना. उसी रिवर को यहाँ पे मैंने बताया, द सेम रिवर इन बांग्लादेश इज कॉल्ड एज जमुना. ऑल आर सेम रिवर. यारलंग सांगपो, देन सियांग इन अरुणाचल, देन ब्रह्मपुत्र इन असम, एंड देन जमुना इन बांग्लादेश. ये बांग्लादेश है. आई होप यू आर अवेयर दिस इज बांग्लादेश. सो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर. यारलंग सांगपो लिखा है ना. Pralay, India's first quasi-ballistic missile to be showcased at Republic Day Parade. So, कल Republic Day Parade है, and we will see actually DRDO manufactured Pralay. Indigenous मतलब made in India. We have not imported from other countries, but we have made in India. मतलब अपनी कंट्री बनाना, उसको indigenous कहते हैं. Short range quasi-ballistic missile to be shown. ठीक है. It is having a range of 400 kilometers, and it adds to the BrahMos and Prahar missile already in inventory and all. ठीक है. तो ब्रह्मोस के साथ ये काफी पावरफुल मिसाइल होगा. सो प्रलय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा प्लीज. इट इज अ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. ओके, वेयर एज ब्रह्मोस इज अ क्रूज मिसाइल. ठीक है, ब्रह्मोस एक क्रूज मिसाइल है और प्रलय जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल है. नाउ यू विल बी थिंकिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल एंड क्रूज मिसाइल. सो दिस इज अ होमवर्क. गो एंड फाइंड आउट एंड प्लीज टेल मी आफ्टर द क्लास इज ओवर. नीचे कमेंट में लिखिएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलिस्टिक मिसाइल एंड अ क्रूज मिसाइल. ब्रह्मोस जो है इंडिया ने अकेले नहीं बनाया. इट इज मेड बाय इंडिया's DRDO along with Russia's NPO Machinosotrian. I don't know the pronunciation. So these two companies have made it. और ब्रह्मोस जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उससे ब्रह्मा लिया गया. मॉस्कोवा रिवर इज एक्चुअली इन रशिया. तो इसको मिक्स करके ब्रह्मोस बना दिया गया. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. ठीक है, बिकॉज ब्रह्मोस से क्वेश्चन आ चुका है. आई हैव सीन इन प्रीवियस एग्जाम्स. दैट इज व्हाई आई एम सजेस्टिंग यू. और ये भी पूछा गया था कि आफ्टर इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम इन 2016, इंडिया कैन नाउ मेक ब्रह्मोस. ठीक है, विथ लॉन्ग रेंज एंड ऑल. तो पहले बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन होता था व्हेन इंडिया वाज नॉट अ मेंबर ऑफ MTCR. नाउ इंडिया हैज बिकम अ मेंबर ऑफ MTCR. नाउ इंडिया कैन मेक लॉन्ग रेंज मिसाइल्स. ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. प्रलय है ना ऑन ये. Then Waqf bill के opposition members suspended Waqf bill panel and all. तो Waqf bill पर I have made a video. So just search on YouTube this and you will get this video. Go and watch it. ठीक है. एक और लास्ट में ओडिशा टॉप्स नीति आयोग फिस्कल हेल्थ इंडेक्स. प्लीज रिमेंबर इट, दिस इज इंपॉर्टेंट. नीति आयोग ने अभी अपना एक फिस्कल हेल्थ इंडेक्स निकाला है. ओके, सो फिस्कल हेल्थ मतलब फाइनेंशियल हेल्थ. फिस्कल मतलब फाइनेंशियल हेल्थ है ना ऑफ द स्टेट्स. अगर आप देखोगे टॉप पर कौन सा अचीवर में एक ही है, देखो ओडिशा. सो ओडिशा इज हैविंग द बेस्ट अकॉर्डिंग टू नीति आयोग. ठीक है, FHI स्कोर मतलब फिस्कल हेल्थ इंडेक्स स्कोर. सो दिस यू शुड बी नोइंग इट बिकॉज़ दीस आर आस्क्ड डायरेक्टली आस्क्ड इन एग्जाम्स. आपको पता होना चाहिए which state is at the top. Okay, so this is all about today's class. Please subscribe to the channel, follow us. Thank you everyone. Thanks for watching. Have a nice day.